जूम पर चालू हो गया, कैमर्स लगे हुए हैं, so network is little problem here, है ना, but if any problem comes out to you, please tell me for that. Okay, so we have seen this in previous class, we will left out with this, and we will see today the boundary and interface complexity. Slides visible है ना अभी भी? स्लाइड्स विजिबल है आपको? अभी नहीं सर, नहीं है, अभी विजिबल है, अभी विजिबल है स्लाइड्स? स्क्रीन शेयरिंग लिख के हाँ नहीं है सर, स्क्रीन शेयरिंग लिख के हाँ सर अब विजिबल है सर, अभी विजिबल है? नो सर, नो सर, अभी यस यस सर, स्लाइड्स आ गई? क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है, जरा रीड करो सर इंटरफेस कॉम्प्लेक्सिटी, बाउंड्री एंड इंटरफेस क्या लिखा है, उसके बाद फीडबैक पुल एंड फीड सिस्टम, हाँ, और क्या लिखा है सर उसके बाद प्लीज इन्फॉर्म टू intimate during the lecture about one speed to language 3 disturbance in network voice. वो तो जनरल इंस्ट्रक्शन है, कोई डिस्टरबेंस हो तो ठीक, ओके फाइन, नाउ इट इज विजिबल टू एवरीवन. नाउ लेट अस डिस्कस द टॉपिक बाउंड्री एंड इंटरफेस कॉम्प्लेक्सिटी. व्हाट इज एग्जैक्टली दिस मेंट अबाउट बाउंड्री? वी नो सिस्टम की एक बाउंड्री होती है, सो इस बाउंड्री की बात कर रहा है. और इंटरफेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये किस तरह के इंटरफेस की बात कर रहा है. तो let us understand what is the interconnection between the subsystem of the system, which is exactly known as interface in system parlance. So this is system के अंदर components भी होते हैं, जिनको हम कई बार बहुत सारे components हैं तो उनको सब सिस्टम्स में भी ब्रेक करते हैं, और कुछ को हम सिर्फ सब सिस्टम्स में ब्रेक करते हैं अगर छोटे हैं तो. और उनके बीच में जो एक्सचेंज होता है दैट इज द इंटरफेस, जो इंटरकनेक्शन है इनमें, वो दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस. नाउ एज वी हैव सीन, द अर्थ इज अ राउंड मास विथ डायमीटर ऑफ 12,000 kilometer. The whole circumference of the earth forms its boundary. जो डायमीटर है अर्थ का, वो अपने आप में एक बाउंड्री फॉर्म करता है, दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द बाउंड्री विच इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. तो अर्थ का जो डायमीटर है उसको हम बाउंड्री माने तो उसके बाहर की चीज क्या हो गई, एनवायरनमेंट. नाउ अगर हम एक इंडस्ट्री से एग्जांपल लें, लाइक इफ वी से लाइक टाटा केमिकल्स, तो टाटा केमिकल्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री, but it is bounded by its organizational boundaries. So every industry in this way has its own boundary, and what is the environment across the industry is the economic environment of the country. ठीक. Now the man, machine, materials, money, information, etc, these flows in and flows out across the boundaries in the economy. Obviously, when we manufacture the things, as I discussed in last lecture also, we manufacture the desired product within the boundaries, that is inside the manufacturing unit. But we need to, flow out those finalized product or finished products of desired quality or required quality from the customer end. This we have to flows out. And what will be flows in? The raw material, the manpower, and the finally in exchange of those finished products, the cash amount. For that, we have done this much manufacturing or provided services, either manufacturing a product or provided the services.
So in this case, the economy can be visualized as a combination of thousands of industries, financial institutes like training institutes, regulatory frameworks, and the consumers. So this way, it is the combination of a particular system as an industry and across the economic environment of the country. Now let us discuss what is feedback, which is simply known as pull, and feed forward, which is known as push in the system. So what are these? First of all, what is the feedback? As I've discussed in yesterday's lecture also, uh, feedback system measures a value and react to its changes in that value. फीडबैक है क्या? जब मुझे आउटपुट मिल रहा है लेकिन जो डिजायर्ड क्वालिटी है उसका नहीं मिल रहा है, तो उसका फीडबैक मैं देता हूं. कहाँ देता हूं? जहां से इनपुट आ रहा है, तो वो इनपुट में मैं ऐड कर देता हूं, सो दैट जो आउटपुट है उस डिजायर्ड क्वालिटी का मुझे अचीव हो. पहले भी मुझे आउटपुट मिल रहा था, बट इट वॉज नॉट इन द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, है ना? तो लाइक फॉर इंस्टेंस, if we see, the thermostat measures the ambient temperature in our home, and if the temperature falls below the minimum setting, then the thermostat activities the furnace to warm your home back to appropriate temperature. The thermostat measures the temperature, but it also feeds the value back into its control, yeah, as we have given to maintain the same. बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग हीटर और एसी में करते हैं, जो ऑटोमेटेड मोड पे रहते हैं. तो वो टेम्परेचर जैसे ही चेंज होता है वो वापस उसको फीडबैक देता है कि जो आउटपुट वाली एयर है वो उसका टेम्परेचर नाउ इट इज चेंजिंग, सो ऑटोमेटिकली उसके इनपुट में चेंज आता है एंड इट रिमेन you know remain in the process of maintaining the same. So this is an automation of feedback, है ना, माने पुल सिस्टम. Now, a feed forward system may be measure a feed forward system maybe measure a number of secondary variables in addition to the primary one. For example, a feed forward thermostat might measure external as well as internal temperatures, and it might sense whether these doors and windows are open or closed. If the system senses that it is cold outside and someone opens the door, then the system will proactively turn on the furnace, or we can say the heat in that particular attempt to prevent that house from falling the temperature. Now, instead of waiting for that temperature to change at the thermostat or at the thermostat, the system anticipates the effect of the open window and attempts to counterattack the heat loss. Either it will counter attack or it will increase the heat generation, so that जो पहले maintain हो रहा था that can be maintained. Another example, if we see about the feed forward system, is video card that increases the fan speed in response to intense graphic activity in an attempt to dissipate heat before the heat actually begins to rise or rose. Now, what is the advantages if we talk about
the feedback based system, having it is quite simple example, but the system should be able to measure the variability, and should be that variability system can take decision on depends upon those variabilities. Now the feed forward system on the other hand must have the ability or capability to anticipate the changes in the measured variable. Anticipate, how it can anticipate? It must have some sensor which can judge the temperature and decision making program, so that if this is going to happen, then this action can be taken up. If this is going to happen, then this action can be taken up. This kind of simple programs can be fitted into it, and the more accurately it can work against these changes, it will be better for the consumer to take up. Now what can be the disadvantages also? Now what are the disadvantages? Disadvantages are, this feedback system can be somewhat inaccurate. How it can be inaccurate? Now let us understand how it can be inaccurate. A thermostat does perform a good job in maintaining the approximate or close temperatures, but the actual ambient fluctuates to some degree as the furnace switch on or off, है ना? Switch on and off uh, in response with those signals of thermostats. Now, many unexpected variables could happen. Now, how it could happen? Say, suppose someone has opened a window, or someone has, left out the door open, and it will be again difficult for the system to keep up the same, because it was not this variable was not programmed. So since this variable was not programmed, so it won't be able to anticipate those changes. So either everything has to be taken care of automatically or properly fit in the program itself. Likewise, feed forward system are only as good as the information on which that system has to work. Now, this system cannot consider those unmeasured or anticipated variables. Now, when we talk about those anticipated variables while making, because it affects the making in judgments or decisions, or we can say these are kind of blind spots which which cause which could cause control to break down, है ना? Proper जो steering जो control है, that could not happen in that case. So this could happen because of unanticipated this kind of changes. Okay. Now this is why uh, many designs with couple of feed forward logic and logic based system providing the backup level of control. So some variability, inbuilt variability is given to them while programming, तो वो एक allowance type का छोड़ा जाता है, so that they can slightly manage of their own, जिसे बोलते हैं ना ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक होता है प्रोग्राम वाला, वो प्रोग्राम पे ही करेगा, और एक होता है ऑटो इंटेलिजेंस। कुछ चीजें उस मार्जिन पे छोड़ी जाती हैं कि कुछ वेरिएबल्स के लिए वो खुद भी जज कर पाए। ठीक है, तो वो भी आजकल चीजें प्रोग्रामिंग में आती हैं, ये वो भी चीजें छोड़ी जाती है। कंट्रोल सिस्टम इज बेसिकली अ डिवाइस और अ सेट ऑफ डिवाइस, it can be a particular device or a set of device which manages rather I should say command
or direct that or I can say regulated the behavior of other devices or system or environment, है ना? कंट्रोल सिस्टम उनको मतलब एनवायरनमेंट से कंट्रोल सिस्टम को इनपुट मिलता है, सॉरी, है ना? तो ये तो कंट्रोल सिस्टम डिवाइसेस को, सेट ऑफ डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है. एंड ऑल्सो पैरेलली एज आई टोल्ड यू, it take ups the input from the environment side. Now industrial control systems normally used in industrial productions for controlling equipment or a machine. Normally what we need in industries is like machines all the time for manufacturing the same. uh, and there are two common classes for the same common classes for the same, which are open loop control system or closed loop control system. Now, how it affects, uh, let us understand what are the open loop control system and what are the closed loop control system. Normally, open loop system control system, their output is generated based upon input, directly on input. जैसा जैसा इनपुट रहेगा वैसा वैसा आउटपुट रहेगा. अब क्लोज सिस्टम में क्या होता है? इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, करंट आउटपुट is taken into corrections and are made based on feedback. Now what if somebody asks you what is the difference between open loop control system and closed loop control system, is open loop control system doesn't carry feedback, and जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है उसमें फीडबैक होता है. तो उसके आउटपुट से जो कंसिडरेशन मिलते हैं और उनके करेक्शंस मिलते हैं, उस पे बेस्ड हम इनपुट में चेंजेस या सजेशंस, रिकमेंडेशंस इनपुट के एंड पे फॉरवर्ड होते हैं. The human body is a classical example again of feedback control system. हमको गर्मी लग रही है, our senses gives a feedback to it, और फैन थोड़ा सा 2 पे कर दो, 3 पे कर दो. ठंड लग रही है, फैन ऑफ कर दो, है ना? सो ह्यूमन सिस्टम ये है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना? नाउ feed forward is a term in which we can say an element or a pathway, within a controlled system which passes a controlling signal from a source to its external environment. फीड फॉरवर्ड सिस्टम में क्या हो रहा है? ये एक एलिमेंट या पाथवे है which a control system passes through controlling a signal source से external environment. Often a command signal from an external operator to load elsewhere in its external environment. And a control system which has only feed forward behavior responds to its control signal in a predefined way without responding how that load should react. ओके, हाउ दैट लोड शुड रिएक्ट, वो काफी जरूरी है. ओके, नाउ in contrast with the system which has this feedback uh, and that adjusts the output to take account of how it affects the load and how the load itself may vary unpredictably, and this load is considered to be a part of external environment of the system. Okay, now this
Now, one another terms comes into picture, that feed forward system control variable adjustments, and it is not error based, and how instead of it is based on knowledge about the process in the form of mathematical model of the process, and knowledge about measurements of the process disturbances. Now, those which disturbs the process has has to have a particular measurement, and this measurement will give us the order of the disturbance, है ना, लेवल ऑफ डिस्टरबेंस क्या है उसको मेजर करेंगे, एंड देन सम प्री रिक्विसाइट्स या कुछ प्री थॉट आर नीडेड टू कंट्रोल a particular thing to be reliable by pure feedback feed forward. Without feedback, है ना, तो वो प्री जज्ड है ना. सो द एक्सटर्नल कमांड और कंट्रोलिंग सिस्टम मस्ट बी अवेलेबल, एंड दैट effect of the output of system on that particular load should be known. वो हमको पता होना चाहिए. Sometimes pure feed forward control without without feedback is ballistic. Now, how it is ballistic? Because once a control signal has been sent, it cannot be further adjusted. Any corrective actions, any corrective actions, any corrective, once a control signal has been sent, it cannot be further adjusted, and any corrective adjustment must be by the way of a new control signal. Now, in this contrast, cruise control adjusts the output in response to the load that it encounters by a feedback mechanism. Okay. Now we have one another term in this, that is open flexible adaptive system. That is a part of it itself, and it is not much explained. So we'll have a single liner look to it. Now this open system has input and output that flows, which represents the exchanges of matter, energy, or information without the information with its surroundings. Now, what is the theoretical frame? If we talk about the theoretical frame, rather theoretical frame बोलूँ तो जो अपन ने thermodynamics में पढ़ा था, thermodynamics में भी we have understood and we have seen like कि open system और closed system और isolated system क्या है, हम क्यों उसको read कर रहे हैं, कैसे करना है. So the theoretical framework, what was that? The open system exchanges matter and energy with its surrounding. Okay. Now most systems are open systems, like a car, a coffee maker, or a computer also. Okay. Now what was closed system? It exchanges energy only, but not matter with its surrounding, like earth or like earth or some other planets we can assume. Okay. Then comes like isolated system, which we have studied in thermodynamics. In isolated system, since it is termed as isolated only, so it exchanges neither matter nor energy with its environment. So these are the theoretical examples of such system, which is called universe. So this is basically a theoretical framework. We say there are many universes, बहुत सारी galaxies हैं, है ना. जैसे हम मानते हैं कि सोलर सिस्टम में अर्थ स्टेशनरी है,
है ना। अर्थ स्टेशनरी है हम मानते हैं, और सूरज के चारों ओर, सॉरी, सन स्टेशनरी और सूरज, इसी सन के चारों ओर सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं। बट सन का भी बाद में पता पड़ा कि एक ऑर्बिट है, सन भी मूव कर रहा है, तो सन किसके अबाउट मूव कर रहा है? सो बाय कीपिंग, हम हमारी गैलेक्सी के हिसाब से देखें तो सन फिक्स्ड है, बट सन भी मूव कर रहा है, उसका भी एक अपना ऑर्बिट है। लेकिन बाकी जो क्या कहते हैं, बाकी जो प्लैनेट्स है उसके रेस्पेक्ट में सन ये है, क्या बोलते हैं, स्टेशनरी है ना, उसके आसपास कोई भी घूम रहे हैं, है ना। और ये हम तो इस तरह से, दिस इज टर्म्ड एज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। हाँ, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। नाउ व्हाट इज प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस? Okay, an open system can also be viewed, can also be, understood as a boundary transformation, bounded or boundary transformation process. That is called a black box. That is a process, or we can say the collection of process which transforms inputs into outputs, and those inputs are consumed, outputs are produced. For getting the outputs to be produced, I can say, and inputs are consumed for those outputs which are need to be produced. Now the concept of input and output here is very broad, in broader sense. Like an example, if you see, an output of passenger ship is a movement of people from डिपार्चर टू डेस्टिनेशन, है ना, जहां से चला और एक जगह वो जाके एक जगह पहुंचेगा, है ना। एक एक जगह से डिपार्ट हुआ और वो किसके लिए गया, एक डेस्टिनेशन के लिए पर्टिकुलर। नाउ इन ओपन सिस्टम we have many interfaces with its environment because it is open, so it interface बड़ा है, उसका environment के साथ exchange ज्यादा होगा। that, और open system में हमने read किया था कि open system में जो एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है। सो दैट इज द सिस्टम दैट इंटरेक्ट्स फ्रीली विथ इट्स एनवायरनमेंट, टेकिंग इनपुट एंड रिटर्निंग आउटपुट। Now again it permits interaction across the boundaries. We can understand, since it is an open system, it receives input from and delivers output to the outside world or environment. Now, if we talk about closed system, which does not have any kind of interaction or exchange with the environment. Now, those changes in the environment and adaptability with respect to environment are not at all the issues for closed system. Okay, so hope you have understood those concepts, and by tomorrow we will continue with the next part of this thing. Now we will understand what is, computer as a closed system, because this is a direct topic in your syllabus. कंप्यूटर एज ए क्लोज्ड सिस्टम क्या है, उसका एग्जाम्पल है तो डेफिनेटली वो डायरेक्टली पूछा जा सकता है। देन वी विल बी हैविंग flow diagram also onto it, and then we'll understand a bit, since ये जो टॉपिक है हमारा जो यूनिट है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सिस्टम्स, एंड सिस्टम में सबसे पहला एग्जांपल, बहुत सारे सिस्टम है बट बहुत सिंपल और बहुत हमारे नजरों के सामने जो एग्जांपल रहता है वो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं। और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स में फिर हम कंप्यूटर एज अ क्लोज सिस्टम क्या है, उसमें इनपुट क्या है, उसका आउटपुट क्या होता है, उसका स्टोरेज कहाँ है, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म में हम सभी इंजीनियर्स के लिए टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली सिस्टम, उसकी प्रोसेसिंग कैसी है, उसका कंट्रोल कैसा है, उसमें फिर स्टोरेज में क्या क्या आता है, और ये डायरेक्टली क्वेश्चन आरजीपीवी में पूछा भी जाता है। सो we'll discuss that thing in detail also by tomorrow. What is ALU, what is CU, and what is central processing unit. And then we'll go for law of requisite variety. What is that? That is again a most popular topic of this unit 1 syllabus, and most preferred one from the एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पेपर सेटर्स को ये क्वेश्चन लॉ ऑफ रिक्विजाइट वैरायटी पसंद आता है।
Then we'll go with system coupling. Yes, simply हम कहें system stresses और system entropy क्या है. हमने थर्मल में भी कॉन्सेप्ट इसके पढ़े हुए हैं, जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क उसका है, जो थर्मल में हमने पढ़ा है. लेकिन हियर वी आर मोर ऑन टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग साइड. तो मैन्युफैक्चरिंग में पहले हम हमारे लिए जो इजी एग्जांपल्स हैं कंप्यूटर साइड के और डेली रूटीन के या थर्मोडायनेमिक्स है, उनके एग्जांपल्स से इन टर्म्स को समझ के देन इन टर्म्स के सिस्टम्स को हमें एज अ बिजनेस सिस्टम समझना है कि बिजनेस में जो सिस्टम होता है वहाँ कैसा ओपन एनवायरनमेंट है, क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, आइसोलेटेड है, अडेप्टिव है, नॉन अडेप्टिव है, फिर वहाँ कैसे स्ट्रेसेस होंगे, एंट्रोपीज होंगी. वी हैव टू लिंक ऑन द बिजनेस एंड, है ना. बिजनेस एज अ सिस्टम, व्हाट वी आर स्टडीइंग इज बिजनेस एज अ सिस्टम. सो बिजनेस के जो सिस्टम कॉन्सेप्ट्स हैं, बाय टेकिंग द बेस ऑफ दिस, हमको बिजनेस एज ए सिस्टम को भी समझना है. हमारा मेन मकसद सिलेबस का वही है. होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक्स. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ और इवन लेटर इन द नेक्स्ट क्लास बाय एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर. Okay, hope everything is being taken up by you people, and I'll call it a day now. Thanks for attending my lecture. Thank you. Have a nice day ahead. We'll meet in tomorrow's lecture now.